Hello bachcho, let's read the question. So the question says that for each of the following questions, four choices have been provided. Select the correct alternative. So this is basically MCQ type question and we have to find out which among the following statement is false. Okay. So जो given statements हैं इसमें से कौन सी false है? So let's do it one by one. So let's start doing the question. So जो first statement है that is every protonic acid has its conjugate acid. So this statement is false. Why? Because if we have any protonic acid, for example let us say we have CH3COOH, ये हमारे पास एक प्रोटोनिक एसिड है. जब ये H पॉजिटिव आयंस को डोनेट कर देगा, ओके, सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? वी विल गेट CH3COO नेगेटिव अलोंग विद H पॉजिटिव. सो यहाँ पे जो ये बनेगा हमारे पास, इट विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस rather than conjugate acid, because अगर acid एक H positive ions को donate कर देगा then there will be no further H positive ions, so that's why it will be its conjugate base rather than conjugate acid. So according to given statement, that is following statement is false, the first option is correct. Let us say ये हमारा first था. Second option we have is pair of Bronsted acid and base that differ by a proton is conjugate acid base pair. So this statement is true. Why? Because according to Bronsted-Lowry concept, अगर हम Bronsted-Lowry concept देखें तो आफ्टर लूजिंग अ प्रोटोन, यहाँ पे हमने देखा जब एसिड ने एक प्रोटोन लूज किया तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस बना. सो इफ वी टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस एसिड, जब ये एक प्रोटोन लूज करेगा देन व्हाट विल बी इट गेट? यहाँ पे it will give H positive plus X negative. So जो ये X negative बनेगा it will be conjugate base of this acid. And अगर हम देखें if we have NH3, okay, ये हमारे पास एक बेस होता है. अगर ये 1H positive या एक प्रोटोन को accept करेगा then what will be it get? It will get converted into NH4 positive. That will be its conjugate acid. So this statement is true, that is pair of Bronsted acid and base that differ by a proton is conjugate acid and base pair. So जो ये हमारे पास conjugate base बनेगा यहाँ पे एक proton नहीं होगा but conjugate acid के पास एक proton extra होगा. So that's why this second statement is true. Okay, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट पे चलें, so it says that a substance that accepts an electron pair to form coordinate covalent bond is an एसिड. सो जब हमारे पास ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस की रिएक्शन होती है, सो ये क्या बनाता है? इट विल मेक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ओके, दैट मीन्स जो हमारे पास ल्यूइस बेस होता है, ओके, जो ल्यूइस बेस होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, एंड जो ल्यूइस एसिड होता है वो एक्सेप्ट करता है. सो इन दिस वे जो हमारे पास ल्यूइस बेस है और ल्यूइस एसिड है वो आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. सो इफ वी टेक एग्जांपल देन वी हैव अमोनिया, ये हमारे पास एक ल्यूइस बेस है, ये यहाँ पे लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ल्यूइस एसिड let us take BF3. So this ammonia will make a coordinate covalent bond with BF3. So that's why this third statement is also true. Now moving on to the fourth statement, that is Arrhenius theory is confined to aqueous solution. So this statement is also true. Why? Because जो हमारे पास according to Arrhenius theory, an acid is a substance which can donate H positive ions in aqueous solution and base होता है जो उसको accept कर लेता है. Okay, but ये जो theory है it is only confined to aqueous solution because जो हमारे पास H2SO4 है and for example we have HCl. So जब हम इसको toluene में dissolve करते हैं so वहां पे these are not acidic. So according to Arrhenius theory ये define नहीं कर पाया why it is not acidic in toluene rather than ये वहां पे H positive ions donate करता है. So that's why we can say that Arrhenius theory is only confined to aqueous solution. Okay, so this is the solution to this question, that is only first statement is false, all other are true. Okay,
So this is the solution. I hope you understand it well. All the best.